हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा हेल्पिंग हैंड। सो आप देख सकते हैं नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP, इसके तरफ से एक वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होगा 17 जून 2025 में। 17 जून 2025 10 AM ऑनवर्ड्स। ओके, एंड किस इंस्टीट्यूशन से ये नोटिस जारी हुआ है? Applications are invited for filling up one post, एक पोस्ट के लिए under National Viral Hepatitis Control Program at Rajendra Institute of Medical Sciences, RIMS, रांची झारखंड on contractual basis। ये contractual basis पोस्ट है, one पोस्ट है, 1 year के लिए है, purely on contractual basis post। Okay, purely on contractual basis post for the project continues whichever is the earlier। एंड ये भेनु जो है डायरेक्टर्स ऑफिस रिम्स रांची। रिपोर्टिंग टाइम 9:30 AM। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट फार्मासिस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट 1, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम recognized institutes and should have registered under the Jharkhand State Pharmacy Council and should have proficient knowledge computer proficiency MS Office and internet। Salary 15,000 per month। ओके, देन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस दिया गया है। पोस्ट प्योरली ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर 1 year टिल द प्रोजेक्ट कंटिन्यूज व्हिचएवर इज द अर्लियर। ये 1 year के लिए पोस्ट है एंड जॉब है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। However, the appointment can be terminated at any time even before the end of the contract period due to any reason. In case of such premature termination, once month salary in lieu of the same will be provided। Okay, the same will not be hold true in case of premature termination due to performance related issues। Candidates can leave the job prematurely giving the 1 month's notice or 1 month salary in lieu of the same। Applications and selection process क्या रहेगा? देखिए, कैंडिडेट्स हैव टू ब्रिंग द फुल्ली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू विथ सुपरस्क्रिप्ट एज एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ किंग पोस्ट। कौन सा पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट। द कैंडिडेट नीड्स टू ब्रिंग द बायोडाटा अलोंग विद द, आप लोगों को एक CV भी कैरी करना पड़ेगा during the interview and self signed passport size color photograph to be pasted on the application form। Okay, qualification degree should be recognized in institute or university and diploma। The age limit is 18 to 45 years as per Jharkhand government rule। Okay, other instructions क्या mention किया गया है? Purely contractual post, such will have any claim whosoever for regulations during the period of the project as well as our termination will have no legal liabilities relating to the stuff and no TDA will be paid। Candidate will have no claim in future of employment in RIMS। Okay, ये जो है ये बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्मेट है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट, एप्लीकेंट्स नेम ब्रॉड लेटर में लिखना पड़ेगा, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल या फीमेल, नेशनैलिटी, रीजन, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, एड्रेस, करेस्पॉन्डेंट एंड परमानेंट दोनों ही लिखना पड़ेगा। अगर आप लोगों का सेम है तो सेम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करना पड़ेगा एंड वहां पे सिग्नेचर रहना चाहिए। ओके, देन then यहाँ पे examination passed, educational qualification for matriculation for ages, matriculation then ages then diploma। अगर आप लोगों को B.pharm है B.pharm देना पड़ेगा and desirable experience यहाँ पे देना पड़ेगा and list of the self attested copies of testimonial with page number of enclosures। ओके, पेज नंबर भी एनक्लोजर मतलब आप लोग कितने पेज का जो अटेस्टेड कॉपीज दे रहे हैं। अगर आप लोगों को 16 दे रहे हैं तो 16, अगर 20 दे रहे हैं तो 20 मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। देन डिक्लेरेशन आए, आपका नेम होगा टू डिक्लेयर दैट ऑल स्टेटमेंट मेड इन द एप्लीकेशंस आर ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट फॉर द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ। इन द इवेंट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन बीइंग फाउंड फॉल्स और इनकरेक्ट, आई हियरबाय कन्वे फॉर कैंसलेशन ऑफ माय कैंडिडेचर। देन यहाँ पे आप लोगों को सिग्नेचर करना पड़ेगा यहाँ पे एंड यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे डेट देना पड़ेगा। ठीक है, यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता है वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।